He's gone in a super tackle situation. He's trying to attack that right corner. Super tackle has it been successful. Jai Bhim will keep struggling. Bandage is off. He's trying to kick off the defender. Now, where is the green card for him kicking the defender? He says he's gone. And here, Rashid, I don't think so. He can make it. Oh, has he? Has he? Strongly has struck in the nationals as well. As along with side on the KMP-YKS that's happened there from Yuva Kabaddi series. This is Jai Bhagwan. He's a big prodigy of our own Yuva Kabaddi series, isn't it? The Bhim. That's what we call him. And there, Bhim wants to go through. Ankle hold comes across. It's a multiple point raid. As the umpires are counting men. That's not very good for the railways. It's a super raid. जिस तरह से मिडलाइन को क्रॉस किया, हालांकि परवेज की जोड़ी वहां पर आपको नजर आती है इंडियन रेलवेज के, बट यहां पर पंकज मोहिते पॉइंट ले जाएंगे. थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए थे राइट कवर. Correct. Pankaj Moite. The railways need him. Gumnam Singh gets the bonus. Now Bhim comes back here, Rashid. हाँ बिल्कुल, पिछली रेड में गुमान सिंह को एक अच्छा बोनस वहां पर मिला. तो जय भगवान जिन्होंने 3 पॉइंटर रेड के साथ शुरुआत की थी, सुपर रेड के साथ शुरुआत की थी. एक बार फिर से कॉर्नर टू कॉर्नर. जरूर हल्की सी सर पे चोट आई है, बट ये चोट इन्हें सीनियर नेशनल में प्रभावित कर देने से नहीं रोक सकती है. जय भीम ने अपने आप को एक्सेलरेट किया. लेफ्ट कॉर्नर का अटैक आया और क्या शानदार बचाया. अभिनीश नटराजन वहां पर मौजूद थे. नवीन, डिफेंडर इज कमिंग टुवर्ड्स हिम. A green card, right? Someone's getting that green card out there. And right, this will be Pankaj Moite coming in for Railways. It's so much so important that he has running hand touch on the right corner. He's got his man, I think. He uses the lobbies as well. Wonderful effort. And this is where Indian Railways are. राइट कॉर्नर पर बहुत ही अच्छी स्ट्रेच रहती है. वहां पर बहुत ही बढ़िया अटैक करते हैं वहां पर पंकज मोहिते, और जय भगवान पर रेड की जिम्मेदारियां पूरी तरह से नवीन. इस खिलाड़ी को हमने देखा युवा कबड्डी सीरीज का इनॉग्रल जहां एडिशन था, रावली एरोज के लिए जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया था, मल्टीपल टाइम्स मल्टी फेसेटेड स्किल्स दर्शाई थी. बट अभिनीश नटराजन ने इस बार फ्रंटल ब्लॉक किया. चेन में आए हैं नवीन, और यहाँ कुमार from the right corner wanted to just attack Guman. Nothing there. और फिर भी अगर हम राजस्थान की बात करें, महिपाल एक अच्छे रेडर हैं, और नवीन हम कैसे भूल सकते हैं गंगाराम, ज्वालाराम गंगाराम एक और ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो बहुत ही बढ़िया रेड्स लगा सकते हैं. उनके पास भी बहुत अच्छी किक्स है. तो जहां पर भी राजस्थान को मौका मिलेगा उनका उपयोग करने का मुझे लगता है नवीन बड़ी जल्दी पड़ेगा, क्योंकि राइट कॉर्नर से जो अटैक आए वो बड़ा प्रबल है और बलशाली है. Very much. And then the ankle hold, so important, and the cover from that left cover coming across on the support. Big ankle hold from Nitish Kumar on that right corner. As Pankaj Moite now will just go in with the defense of 4. He needs to have a touch point, but if he does not, the next raid will be a 2-or-die raid for Indian Railways. There, frontal double thigh hold, fabulous effort. Rajasthan have made sure with गंगाराम अटैक किया. नितिन का अच्छा साथ आया और गंगाराम को पहला पॉइंट मिला है. क्या डबल थाइज पर वहां पर होल्ड किया था नवीन. बहुत ही प्रबल और बहुत ही शानदार डिफेंडर के तौर पर बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है, और युवा कबड्डी सीरीज में हमने देखा है वर्चस्व बनाते हुए. अभिनीश नटराजन भी एक कमाल के डिफेंडर है, बट इस बार राहुल चौधरी का रिवाइवल आ चुका था, तो राहुल चौधरी रेड पर गए और अंक ले आए. Indian Railways are now facing that heat to stay on in the match. और बिल्कुल आपने सही कहा, वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर आपको वहां पर त्यागराजन युवराज नजर आते हैं, पर इस बार फिर से नीतीश कुमार जय भगवान को एक और बार शिकार बनाते हुए दिखा रहे हैं. Wow, that's a big raid. The very good defender there, Rashid. He's been taken off. लेफ्ट कवर से अटैक आ रहा था, वहां पर गंगाराम गए थे, पर बहुत ही अच्छा फोर्स का उपयोग किया वहां पर इंडियन रेलवेज के रेडर ने, और 2 अंक वहां पर चुराए. राजस्थान 2 अंकों से पिछड़ रहा है, ऑल आउट की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहा है. महिपाल को टच पॉइंट चाहिए होंगे. राजस्थान बनाम इंडियन रेलवेज, क्या डिफेंडिंग चैंपियंस को 4 बार के लगातार चैंपियंस को यहां पर राजस्थान बाहर दिखला पाएगी. अभिनीश नटराजन की स्ट्राइक रेट बता रही कि बतौर डिफेंडर उनका वो लेकर आते राहुल चौधरी, बट यहां राहुल चौधरी एम्प्टी हैंडेड आए हैं. 10-7 का स्कोर है. अब गुमान सिंह क्या ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे. 3 का हाउस है, अच्छे कॉर्नर्स है राजस्थान के पास भी. आपको वहां पर लेफ्ट कॉर्नर के तौर पर नजर आते हैं जितेंद्र, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, और देखते हैं कि क्या गुमान सिंह उनकी तरफ अटैक करेंगे. राइट एंड से राहुल चौधरी अटैक करने गए नवीन. इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी.
Yeah, and also out. 72% स्ट्राइक रेट नवीन, क्या शानदार स्टेट्स हैं। और अगर आप मुझे मौका दें तो एक इंटरव्यू जो हमने उनका लिया था नवीन, उसमें उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ रेडर का वहां पर तमगा अपने पिताश्री को दिया था। Yeah, fabulous. That's good. And now what is he doing in that left corner? Stand in the center, ask the defenders to do their job, and right cover comes across. Jwalaram. Fabulous work along with Nitin. Yeah, that combination was very good. Nitin Kumar. Bonus, yes. क्या शानदार परफॉर्मेंस। नितिन और गंगाराम की जोड़ी हमने लगातार अरावली एरोज के लिए युवा कबड्डी सीरीज में भी देखी और नितिन की भी एक कहानी रही है, वो जो कुछ दिनों पेपर में भी बड़ी चर्चाएं में थी कि किस तरह से प्रदर्शन दिखला रहे हैं। बट यहाँ जय भगवान को शिकार बनाना डू और डाई रेड में नवीन। राजस्थान लगातार पिछड़ रहा, इंडियन रेलवेज आगे बढ़ रहा। Else to take that pressure. You can't have your premium raider go in. That's where I don't approve of that fact. Tyagarajan on that left corner did well, and now once again Nitin and Jwalaram once again from that cover defense. And he can raid as well because Rahul Chaudhary needs somebody to support him. Rahul Chaudhary there, number 2 there, he's standing without getting involved in the defense, which is good. Beam! Come on! Once again, he's dismissed because he's attempting a tackle. 2 points here. पंकज मोहिते देखते कि कहां से वो अटैक आया। सबसे पहले किक लगाने की कोशिश की राइट एंड से नवीन। देखिए ऑलरेडी जो पंकज मोहिते का मोमेंटम था वो मिड लाइन की तरफ बढ़ चुका था, तो एक बड़ी चूक वहां पर नजर आई। जय भगवान के साथ में राइट कॉर्नर भी बाहर की दिशा में गए हैं, अब वहां पर महिपाल रेड पर है। क्या बहुत समय के बाद यहां पर टच पॉइंट मिलेगा? जो 9 पर गाड़ी अटकी थी 10 अंकों पर अब स्कोर पहुंचेगा। Yeah, and also more importantly, they have that strong Storm sitting in the bench. So when that comes out, there's something else happening. And once again, this cover defense is good. Is a defender also gone out? Oh, they're saying Raider safe. Hang on. They were all up in arms, the umpires. Surinder Gill, as he plucked off points in a heap. Oh, it's a super raid. नवीन 3 अंक वहां पर अर्जित कर गए। सुपर रेड वहां पर ये नजर आई है, बहुत ही कमाल की सुपर रेड नजर आई। और जिस कार्य के लिए इस रेडर को जाना जाता है वही किया। बस जय भगवान का रिवाइवल जरूर आया था, क्या अब वो यही कार्य कर सकते हैं जो पंकज मोहिते और साथ ही साथ गुमान सिंह कर रहे हैं? इस बार टच पॉइंट की जरूर वहां पर कामना की है। आशा करते हैं कि जय भगवान को वहां पर टच पॉइंट मिला भी है। और किसका शिकार बनाया? गुमान का शिकार। राइट कॉर्नर पर अभिनीश नटराजन वहां पर मौजूद थे, तो ज्यादा अंदर जाने की नहीं सोची, ये अच्छी चीज है। अब डिफेंस को यहां पर इनकैश करनी पड़ेगी इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि डू और डाई रेड है। सुरेंद्र गिल यहां पर आएंगे डू और डाई रेड पर। क्या सुरेंद्र गिल ने पहले एंकल को जर्क किया और उसके बाद मिनी डुबकी लगाई, और डुबकी लगाकर कितने पॉइंट्स अर्जित कर गए नवीन? काउंट कीजिएगा। My God, I am sure it's another super raid this time. It's a 4-point raid. Surinder Gill. Now, what went wrong was the ankle hold from Yadav in that left corner. Now, there you see. He was very casual, I think, Jitendra Yadav. He just kicked that one away, and then Jai Bhagwan also in the mix. Rajasthan now left with Rahul Chaudhary only to revive, man. Ankle hold, that's it, gone. Probably he's got the bonus. And all out. Yes, they've got the bonus point and the second all out Arshit already. That's why Indian Railways are so strong, the 4-time champions. वाओ, जस्ट वाओ। देखिए इस बार पिछली जो सुपर रेड थी नवीन, शायद उसी ने वो पूरी तरह से कार्य कर दिया था। राहुल चौधरी तो जानते थे कि इस बार डिफेंस एक साथ टूटेगा, फिर वहां पर शायद सरेंडर बोनस वहां पर अर्जित कर गए, फिर बहुत अंदर जाके हैंड टच करने की कोशिश की। अब पंकज मोहिते रेड पर आए, राइट कवर नितिन और गंगाराम। ये 2 डिफेंडर ऐसे हैं जो राजस्थान को मैच में लगातार वापसी कराने की कोशिश कर रहे हैं। But I am not too okay with that one. I'll tell you why, Harshit, because the defense corner should attack first and then the cover should just provide the cover. That's not happening for Rajasthan. It's the covers who are attacking first, and that's why probably they're just their world. Right, Jai Bhagwan. Definitely. What's he got now? नवीन, क्योंकि आपने वहां पर गंगाराम की बात की है, युवा कबड्डी सीरीज में गंगाराम ने जो परफॉर्मेंस दर्शाया वो बहुत ही शानदार रहा है, और उन्होंने रेडर के तौर पर बहुत अच्छी अच्छी किक्स लगाई है। जूडो कराटे की किक्स वहां पर नजर आई है। और अभी युवा कबड्डी सीरीज का केएमपी वाईकेएस भी जारी है, जिसे आप फैनकोर पर बहुत सारा समर्थन देकर देख रहे हैं। जय भगवान ने इस बार बुलडोज किया, ये है इनकी भीम शक्ति, जिसके लिए आप उन्हें भीम बुलाते हैं नवीन। Yeah, there, that's a confirmation with bonus. If you see his last 5 raids or 6 raids even,
Oh, that's a good hand touch. Rahul Chaudhary goes in, attacks, I think, Parvesh first on that left corner. क्या परवेश पर भी शिकार बनाया और दो खिलाड़ियों को वहां पर अर्जित करके टच करके डैश करने की नीतीश ने कोशिश की, तो नीतीश और परवेश को बाहर करना ये इंडियन रेलवेज को ऑल आउट का धमाके देना जैसा होगा। इस बार राइट कॉर्नर ने, पिछली बार लेफ्ट कॉर्नर ने एंकल होल्ड किया था, तो राइट कॉर्नर ने इस बार किया और लेफ्ट कवर का सही साथ नवीन। Yeah, very well done. They're reducing players, and that's the first all out. Rajasthan has inflicted the all out on Indian Railways. This is not very good for the Railways. They have not been known to allow the opponents to make a big comeback. Pankaj Mohite comes in, and yeah, I was just saying, the defense of Indian Railways is very intelligently just giving 1 point to Jai Bhim. That's all. They know that this raider can bring points in heaps. What was Pankaj Mohite doing? He was blinded. The covers once again of Rajasthan doing the magic. क्या बात है, क्या बात है। परेशान हो गए थे पंकज मोहिते, थोड़ी सी बैक दिखा दी थी लेफ्ट कॉर्नर को, लेफ्ट कवर को, और उसी समय पर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना। राइट कॉर्नर भी अटैक करने आया तो लेफ्ट कॉर्नर ने भी वहां पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखलाया। जय भगवान रेड पर है, क्या इस बार हैंड लाइन मिड लाइन के पास जा पाएगा? डैंगलिंग हैंड का टेक किया गया नवीन, रिस्की टैकल था। Yeah, totally risky because he could not break that chain from that right corner and right empty-handed. बिल्कुल सिर्फ बोनस चुराने दे रहा है। राजस्थान का जो डिफेंस है वो सिर्फ बोनस टच पॉइंट बिल्कुल नहीं देना चाहता। ये बहुत बढ़िया है। महिपाल इस बार रेड पर गए हैं, बट इस बार बैक उन्होंने भी दिखा दी थी। जो पंकज मोहिते ने गलती की थी वही गलती शायद इस बार महिपाल दोहराते हुए नजर आए, और इसीलिए 1 पॉइंट जो इंडियन रेलवेज को मिला है। Yeah, correct. Don't show the back on a kabaddi mat and in the borders of our country. Yeah, that's where should not be showing the back at all. Indian Railways still having the lead across, but Harshit, in Pool A, if we can just go back and talk about this, Indian Railways had a score difference of plus 49, topping that pool. And that is where they're so good. Pankaj Mohite once again. Why are they travelling in so deep? And why are they giving the options to the defense of Rajasthan? पर पंकज मोहिते थोड़ा सा नर्वस क्या नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बट फिर से देखिए कॉम्बिनेशन नवीन, राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर जिस तरह से अटैक करते हुए नजर आए वो बहुत ही शानदार था। जय भगवान जो है दोनों दिशाओं में अटैक करते हैं, दोनों दिशाओं से वो रेड लगा सकते हैं, बहुत ही उज्जवल खिलाड़ी है। और जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा था नवीन, उस इंटरव्यू की तरफ वापस दर्शकों का जो है थोड़ा सा संदेह और संदेश चाहूंगा, एक और टच पॉइंट वहां पर मिलता हुआ। Yeah, it was not right. It was not right from Abhinesh. Should have just stayed back. I think there's an official timeout that's been taken. Right, Ashit, I think you will have time to explain on that story. तो नवीन, हम युवा कबड्डी सीरीज के समर एडिशन में जय भगवान को जब सर्वश्रेष्ठ रीडर का अवार्ड मिला, तो जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बड़ा इमोशनली, जो कुछ ही समय पहले उनके पिताजी जो इस जीवन में हमारे बीच नहीं रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मुझे हमेशा कबड्डी के लिए बहुत मोटिवेट किया करते थे, और मैं ये सर्वश्रेष्ठ रीडर का जो अवार्ड है उस मुकाबले। Yeah, of course. I've never spoken about my father here, but I'll tell you why I'm bringing this up. Because my father is hale and healthy, thankfully. BSNL, if you see that in Pool A, Indian Railways, Madhya Pradesh and BSNL, my father was a senior engineer in BSNL. Whoa, wow, Naveen. Yeah, of course, he didn't play kabaddi. He's retired. I am the only sports person in the house. But yeah, that's a nice ankle hold on Jai Bhim. Fabulous. He just went into kick. But yeah, the attack on that right corner was really good on the ankle hold. Yeah, I was so happy to see that logo out. I'll show my father once. But yeah, Guman Singh Harshit, I think it's been dashed out. Or are they counting, man? Are they counting the players? It's a dash. That's what they are trying to say. Rajasthan, they will discuss it out with others as well. Nah, read it out maybe. Yeah. Oh, जी बिल्कुल read it out. Yes. Yeah. बिल्कुल यहाँ पर अच्छा डैश आया। नितिन कुमार वहां पर क्या अटैक करने गए थे, अच्छी तरह से राइट कवर से आगे की तरफ जाते हुए नजर आए,
और एक अच्छा अंक जो है वहां पर मिलता हुआ नजर आया। महिपाल वहां पर मौजूद थे कवर के डिफेंडर के तौर पर। सिर्फ 7 अंकों की बढ़त है अभी इंडियन रेलवेज के पास, बहुत बड़ी बढ़त आप कहते नहीं नवीन। और जो आपका फॉर्मूला है कि 3 रेड में मुकाबला कहां से कहां हो जाता है, 7 रेड से अब शायद जो अंतर है वो 4 या 5 का रह जाएगा। 2 पॉइंट तो कंफर्म है। Nice escape. Very well done. See, first Parvez kept himself out, but then wanted to attack it when it was not a right time to attack. And then that also brought in the other defender from the right corner. Yeah, Surinder Gill. Yeah, something to do. Oh, God. Oh, he's not going to touch. He's not going to touch. The chain was broken. And he will still try to cross the midline using the lobby and his height. They're still trying to count men. They're trying to discuss it out. The umpires have a big responsibility of controlling the players first. Wait, hang on. There's the card. He's searching for the card. Just be careful. He's not happy with the decision. He's very disappointed, of course, with the decision first on that right corner. Each 1 point. That's it. I was thinking it was a multiple point discussion. ऐसा लगा था, पर क्या एक डिफेंडर वहां पर पूरी तरह से डैश करते हुए वहां पर बाहर चले गए थे। एक पैर, एक दफे के लिए हल्का सा पैर उनका उठा था नवीन, और रेफरी का ये कहना 1 ईच पॉइंट। पर अब सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है। जय भगवान को ध्यान देना होगा इस सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी में नवीन। हम कहने ही वाले थे कि यहाँ जय भगवान का शिकार बनाया गया। 2 पॉइंट इंडियन रेलवेज को दिए। Harshit, he does not have a skill of turning towards the lobby. That's all. He can bulldoze the defenders. He can confuse the defense with their movement. But क्या इंडियन रेलवेज के लिए अब यहाँ पर जो है वो सुधाकर को हम देख सकते हैं। हमने उनके स्टैट्स देखें कि कितने कमाल के उनके स्टैट्स हैं, तो क्या उनका एक बिग ऑफ रेडर के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। बट ये एक डू और डाई रेड है। पंकज मोहिते रेड पर हैं। देखते हैं कि क्या पंकज को पॉइंट मिलेगा। एक और बार लगातार नवीन, तीसरी या चौथी बार लगातार पंकज मोहिते को शिकार बनाया गया है। yeah, nice ankle hold from that right corner. Nitin does really well. He back trails, gives Pankaj the angle to come in, and then attacks him inside the bonus line. That's very good. It's a 2 or die raid now. And it's a super tackle situation as well. Yeah, Stormy Sudhakar, you're talking about him. Last match he did score 7 raid points. Yeah, there is chances. If such things happen, it's a super tackle. Rajasthan have given away 2 extra points. This is not what they wanted. Yeah, you speak of Sudhakar, सुपर टैकल, यस, अ मैन रिवाइव थे, तो वहां पर भी उन्होंने 100+ पॉइंट्स अर्जित किए थे। और वाईकेएस में तो जो उन्होंने डुबकीज लगाई है, जिस प्रकार से वो स्टॉर्म लेकर आए, वो बिल्कुल अकथनीय है, अविश्वसनीय, प्रशंसनीय है। बट यहाँ 4 का हाउस है। अब क्या यहाँ रेडर राहुल चौधरी जो है कुछ कमाल कर पाएंगे? महिपाल लेफ्ट रेडर है, राहुल चौधरी लेफ्ट रेडर है, बट इस बार लेफ्ट रेडर ने राइट टाइम पर राइट काम कर दिया है। गेट अप, कम इन फॉर द डैश, ही डिड नॉट हैव द प्रॉपर डैश, राइट? वी नो दिस कोच. सोहनलाल जी, yeah, he was there in the JSG Women's Yuva Kabaddi series as well. I think he was coaching the Rajasthan side there as well. He was I think the Aravali Arrows. अरावली यानी कि सुनील वहां पर अंदर आए हैं नवीन। ये भी एक अनुभवी डिफेंडर हैं, क्योंकि सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है तो इंडियन रेलवेज ने दाव खेला, हैट्रिक अपनाई है। सुनील और परवेज वहां पर क्या शायद अंदर नजर आ सकते हैं, बट अभी गुमान एंकल पर क्या गिरफ्त बना पाए हैं, क्या डैंगलिंग हैंड का टेक कर पाए हैं नवीन? और अगर ऐसा है तो राजस्थान फिर से डंके की चोट पर मैच में वापस आया है। Fabulous. They've announced their comeback, and now Jay Bhagwan, he wants to clean this up. 2 good defenders, Parvez and Sunil. He should not be too greedy. If she can go in and attack Sunil on the running hand, that would be really nice. Not against Pankaj. Don't turn left. Oh, there, finally. Somehow, he's just got 1 point. Stop turning left, Jay Bhim. You're not a left raider. You should have just gone in with the running hand touch, Arshid. And thankfully, see, if imagine Parvez shouldn't have attacked him. He would have gone empty-handed. Wow, who do we see? The storm is in the house. Ankle hold, and this was a proper tackle. Cherlatan, Dharmaraj Cherlatan, the coach, of course, of Indian Railways, brings the Tamil boy on. And this is the last player standing, 328 points. Phenomenal record. Just in one edition. Just that winter edition that happened there in Puducherry. 415 rates.
Look at the bonus points. 50 bonus points, 217 touch points. Now, out of those all, he just needs one touch point now to save the Indian Railways from the second all-out. Stormy comes in, first raid, bonus point. And then very easily they're giving him the bonus away. He's just thanked the heavens for the big chance that he's got. Once again, yesterday 7 raid points. And here, Rashid, I don't think so. He can make it. Oh, has he? Has he? Stormy has struck in the Nationals as well. The big jump comes across. From where do he find all those escape routes? He's also asking for the bonus. Yes, it's a bonus +3. It's a 4-point raid. Definitely bonus, yes. It's a super duper raid. I am not able to control my emotions here, Rashid. इसे कहते हैं मौके पर चौका, पहले जंप लगाई और उसके बाद वो डुबकी आई। नवीन, ये लीजिए, ये डुबकी का प्रिंस है, ये मास्टर है। पहले जंप लगाई थी और उसके बाद मिनी डुबकी नजर आई। इसे कहते हैं मौके पर चौका लगाना। बोनस +3 टच पॉइंट लेकर आना। जय भगवान कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक टच पॉइंट अर्जित किया है। रेफरीज कह रहे हैं कि हम यहाँ के बॉस हैं, हमें निर्णय लेने दीजिए। जिस bulldozing escapes, I think he's just added on a little weight, that's all. 1 point only. 1 point only from that right corner. Can we see the replay, if possible, of Stormy saving the Indian Railways? Bonus +3. If we have time, we can slot it in. पर नवीन, एक और बार वो काम करना पड़ेगा, एक और बार वो काम करना पड़ेगा। 5 मिनट के आसपास का समय शेष है। एक टच पॉइंट और। इसे कहते हैं स्मार्टनेस, इसे कहते हैं एजिलिटी, इसे कहते हैं कि बल के साथ साथ दिमाग का उपयोग आप किस तरह से करते हैं। जोश, जज्बा, जुनून के साथ जहन का उपयोग कहते हैं नवीन आप। Totally. It's the Jahanesh raid that's really is doing the trick for Stormy. Jai Bhagwan. Block. Another. Hang on. Raider has crossed the midline. He's safe. Couple of points. Oh my God. Once again. Jai Bhim versus Stormy. This is match has gone now in that direction. नवीन, मैं तो कहूंगा दो युवा खिलाड़ियों के बीच मुकाबला चल रहा है। एक तरफ एक समर एडिशन के वहां पर एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने वहां परचम लहराया था, तो दूसरी तरफ विंटर एडिशन के। दोनों अपोजिट है। समर का महीना विंटर से अपोजिट है और वैसे यहाँ पर चीर प्रतिद्वंदी हैं दो खिलाड़ी, जय भगवान और सुधाकर। पर इस बार शिकार बनाया गया सुधाकर का। Oh my God, I'll tell you what, Arshid. Jai Bhim has done something very, very unusual. He's got the bonus point. Sudhakar did not see Jai Bhim was standing in front of the midline. Look at Jai Bhim from that left corner. He went under the chain. As a defender, he just covered himself behind the chain. Jai Bhim, my God. Now, do we have a Kabaddi Kamal moment in this Nationals? That is the highest point of Jahan. To stop the storm, you don't have to have a big bucket. Just a tap closure was enough. Surinder Gill, couple of more points here. And Jai Bhim. Now there's a possibility. Because Stormy has been revived with a touch point. I'll tell you what. Whatever the result of this match, of course it's a qualifier, I know. Shouldn't be saying that. Both prodigies of Yuva Kabaddi series have done phenomenally well. Diving ankle hold. Sudhakar. Yeah, generally does not struggle. We've seen this as well, isn't it? He is not a very, a raider who will struggle a lot. That just gives up. That's okay. But he struggles. He goes through. ये ब्रूचवल है नवीन, ये भीम है, ये अपने आप में विशेष है। संदेश दिया इंडियन रेलवेज को। ऊपर से गए चेन के। अक्सर खिलाड़ी होते हैं डुबकी लगाते हैं, बट इन्हें पता था कि चेन लो है, तो चेन के ऊपर से जाते हुए नजर आए। अब सिर्फ 2 अंकों का अंतर बचा है नवीन। अभी से हाथ थोड़े से कांपने लगे हैं, जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट आने लगे हैं। 2 अंकों का अंतर। राजस्थान क्या मैच में वापस आ रहा है? आ चुका है नवीन। खतरे की घंटी दोनों टीमों के लिए बराबर है अब। Wow, what an ankle hold from that left corner. They did not even need that support coming in. But I still am not able to come out of Jai Bhim's biggest Jahan moment. He's gone in a super tackle situation. He's trying to attack that right corner. Super tackle! Has it been successful? Jai Bhim will keep struggling. Bandage is off. He's trying to kick off the defender. Now, where is the green card for him kicking the defender? He says
He's gone out of the lobby. It's a super tackle. What a way. 2 points here for Indian Railways. They have made a big bounce of a comeback. क्या डाई वाई राइट कॉर्नर से, और उसके बाद नितेश ने लगातार जो है डायरेक्शन को बदलने की कोशिश की। जय भगवान ने पूरी तरह से स्ट्रगल वहां पर किया, पूरी तरह से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की। अंततः आते आते निकले जरूर थे, पर तब तक वो विसल बच चुकी थी। बहुत ही बढ़िया सुपर टैकल, और मैच क्या बन चुका है नवीन। जरूर 3 अंकों का अंतर है, यहां पर कुछ चमत्कारिक प्रदर्शन की आवश्यकता है, बट पंकज मोहिते जो है वो सिर्फ मिड लाइन के पास ही खड़े हैं। Yeah, that's more than enough, isn't it? Now for me, the match turner is that super tackle. Another single point only. So this is not any which way is going towards Rajasthan. Indian Railways, I think, have qualified in this qualifying number 1. They've gone in. He's crossed the back line very nicely, Pankaj Moite. That's it. It's all over. It's because of that one big super raid. Bonus +3 from Stormy and that super tackle that happened. Jai Bhagwan gave his life, Arshit, to escape that super tackle. Was not enough though. Ankle hold, 51 for Indian Railways. They qualify. जी, क्वार्टर फाइनल नंबर 1 जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली टीम बनती हुई फिर से 4 बार की जरूर अभी भी अंतिम विसल बजना शेष क्या बचा है। जय भगवान, आपने अपनी जी जान लगाई, लहरों से डरकर नौ। What is happening? Think probably one last raid. That's okay. You just stand near the midline. That's fine, Pankaj Moite. Even if you don't cross the walk line, even if it's 1 point, that's okay. They have stretched away from the 40th minute. Hey, that is supposedly to be happening when there was a tie, no? We were just talking about what are the tie pointers. It's not a tie. It's clocked down. No, that's okay. That's fine. 50 for Rajasthan. That's okay. Even couple of points, is it? Match over. That's it. Indian Railways with 2 points, and they finally do qualify. Wow. 53. Right. We just wanted to say the balk line would have been considered as a bonus line if there was a tie. But they have